This call is now being recorded. Okay, guys, in the previous session, we have started with the topic of convolution, right? In case of convolution, we have seen that it is basically x of tau dot h of t minus tau. So there is one small confusion amongst the students because some of the students has messaged me. He said that we didn't understand this particular step. So take care. I told him like we will do it in the class itself. Like, for example, I have this particular question, 3.7.6. I hope the screen is okay. I'll share the screen as well. Fine. Okay. So this was the question in the among the students. Like perform the following convolution operation of two functions in time domain, and you have over here as x1 of t equal to e raised to minus of 4t u of t, and x2 of t as u of t minus 4. So what is the meaning of this, sir? So if you talk about the very first case, for example, if I want to plot e raised to minus of 4t u of t, and for example over here I want to plot like e raised to t minus 4. So how this can be done, sir? If I talk about e raised to minus 4t, so e raised to minus 4t indicates the exponential decay at the speed of 4. So decay will be very fast because it is 4 over there, and it is only existing in the first quadrant. That means it is going from 0 till t equal to infinity. Yes, I hope you all agree to this. If I talk about u of t minus 4, so this means this is a unit step function starting from t equal to plus 4. So t equal to plus 4. So from here, it is going to start with the magnitude of 1 because it is a unit step function. Then the question to arise कि ये दोनों में से x1 और x2 में से किसको x लेने का और किसको h लेने का. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सिंपल होता है उसको आप h लीजिएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सिंपल कम्स आउट टू बी एज दिस. अगर मैं इसको सिंपल लेता बिकॉज इसके साथ में मुझे क्या करना है, आई वांट टू गो विद t माइनस ऑफ टाउ एंड x को मुझे रिप्लेस करना है विद x ऑफ टाउ. सो आई कैन राइट ओवर हियर एज x ऑफ टाउ इज इक्वल टू e raised to minus of 4 tau, okay, and u of tau. It will be u of tau. Do I need to write u of tau over here, sir? No. Why? Because u of tau is only helping me to know, okay, what are my limits, what is my actual exponential decay traversing from. So it is traversing from 0 to plus infinity. If I talk about x of 2t, that is my h of t minus tau, I simply need to replace t with t minus tau. I need to simply replace with t as t minus tau. So now answer will be like, it will be coming from as u of t minus of tau minus of 4. Okay, t minus of tau minus of 4. Now, if you try to check out with this, this can be written as u of minus of tau plus t minus of 4. Why, sir? Why I need to write like this, minus of tau plus t minus 4? Because now if you try to check out that x is now changed as variable from t to plus tau, and h also has changed variable from t to tau. So now in order to write the standard form, for example, if I say like, if I want to write like shifting, so I write like u of t minus 2, where t is a variable. Now my variable is not t, so now my variable is tau. So in order to write, I write like minus of tau plus t minus of 4. Have you understood this, sir? Okay. Now, if I talk about like h, if I talk about h, so h t minus 4 means, h of t minus 4 means, okay, now this is, it is equal to 1. The value of t, that I mean to say like it is equal to 1. I'll write over here in fact of this. Like for example, if I say that now this value h of tau, this value is equal to 1. When it is equal to 1, only when your tau value is greater than 4. Yes, I hope you will agree to this. When it is greater than equal to 4, only it is equal to 1, and it is equal to 0 when it is tau less than 4. So just come over here, sir. I'll explain what I'm trying to say. The same thing is mentioned in this case, that h of tau is equal to 1. H of tau is equal to 1 when tau is greater than 4. When tau is greater than 4. I hope you all agree to this. H of tau is equal to 1 when tau value is greater than or equal to 4. Means here I am not considering Gibbs phenomenon. Now I simply need to replace tau by t minus tau. अब मुझे रिप्लेस करना है tau को t minus tau के साथ में. क्यों? Because it is the
need of the equation, it is need of the formula of the convolution, like x of tau h of t minus tau. I have replaced t with tau, and I have to replace now h of tau by t minus tau. Okay, so I'll writing about the h of t minus tau. So now since I have replaced tau by t minus tau, the same replacement has to be reflected here as well. So I'll write about t minus tau greater than equal to 4. So I'll just do the correction, sir. अब यहाँ पे क्या लिखने वाला, I'll do what I'm going to write here as t now is given as t minus tau greater than or equal to 4. Fine. Now, what is my interest, sir? What is my interest? My area of interest is what? Tau. So now I need to make this tau coefficient free. So I can write simply as minus of tau greater than or equal to 4 plus t goes over there, becomes as minus t. I have this. Now my dear students, what I'm supposed to do? Now I'm supposed to make this tau again coefficient free. पहले यहाँ पे प्लस टी माइनस था, प्लस टी को वहां भेजे तो 4 माइनस हो गया. अभी माइनस जो इसको अगर मुझे प्लस करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू मल्टीप्लाई सिंपली बाय -1 on both the sides. If I multiply minus on both the sides, it becomes as plus tau. And since I'm multiplying by -1, I need to change the sign from greater than equal to as less than equal to. Fine. Now this will become minus of 4, and this will become now plus of t. And after computation, I have this as an equation. Got it, sir? If you try to check out that now value is 0 over here and till t minus 4. Fine. It is 0 and t minus 4. Now just have to check over here what I'm trying to say. 0 to t minus 4. 0 to t minus, because it was initially it was over here. इसको मैं पूरा सरका के shift करने वाला हूँ मैं, अपने का ना shifting towards right. If I start moving over here, this entire thing will come over here, and then I can set it from ranging from 0 to t minus 4, and I have this as an expression. What is x of tau, sir? X was tau was only e raised to minus of 4 tau. U of tau आपको consider नहीं करना है, because u of tau is only going to give you the limits. कि आपका जो x1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? It is from 0 till it is still 0 till infinitive. Fine, because it is starting from it is a heavy units type function. And heavy side function is the meaning of it is only existing in the first quadrant. So is this question clear to you, sir? This was one of the question of the student. Sir, ये limits कैसे यहाँ पे substitute किया, ये कैसे आया करके. The student has messaged me. Is it clear to you, sir? Any question on this part? What we have done in this case? Okay, fine. Thank you very much, sir. Let's proceed ahead with the today's question, that is the correlation. What is the meaning of correlation? So just give me a moment, sir. I'll come to the respective notes over there. I've already shared these notes with you. Convolution and correlation. And I want you to come over here. Page number 4 of convolution and correlation. I hope this notes is shared with you. You can open up these notes fast. Kindly open these notes. Have you opened these notes in your at your terminal, sir? Convolution and correlation. I've already shared this in the WhatsApp group. You may go and check out over there. Now, sir, what is the meaning of word correlation? यहाँ पे आपको देखने मिलेगा auto correlation लिखा गया है. तो क्या मतलब होता है इसका correlation का? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Why do I need this? Sir, we have started with the topic of convolution. Convolution, sir, we understand what is the meaning of convolution. So why do you use convolution? So convolution is only used to find the impulse response of a system. For example, कोई system अगर है और वो system को अगर मैं delta input देता हूँ, delta of t, then obviously my output will be h of t, impulse response. Delta t is the notation for impulse input and h of t is the notation of impulse response. तो वो क्या बोलता है, कोई भी सिस्टम होने दो, कोई भी सिस्टम को अगर आप impulse input देते हो तो you get output as h of t, and your output h of t is basically the a or the transfer function or the processor or the controller which is there inside the box. तो वो आदमी इसके बाहर आने वाला है, because we simply know कि a is equal to h of t divided by delta t, and we know very well that area under a curve delta t is equal to 1 and can be written as simply as h of t upon 1 is equal to h of t. Fine. And now since you know that h of t, you know the value of a now, what is a inside, then you can simply write, for example,
like if I write here like x of t, you get answer as what, sir? Y of t, and hence y of t can be written mathematically. Y of t is equal to a times x of t, and a can be replaced as h of t. A can be replaced as h of t. From where do I get, sir, h of t? I get from this equation. That is a basic physical significance of convolution. अब वो क्या बोलता है कि now since you know what you know, since you know that what is the value of a, now for any arbitrary input, अभी input कोई भी होने दो सर, any arbitrary input you will come to know what will be the value of y of t. मतलब अभी आपको arbitrary input 3 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट -2 वोल्ट देने का जरूरत नहीं है. बिना दिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ 2 10 20 आंसर आना चाहिए, -3 ओके, -3 10 -30 आंसर आना चाहिए. मींस आप बिना दिए आप बोल सकते हो कि भाई क्या आंसर आने वाला है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स, व्हाट इज द गेन, the efficiency or the transfer function of the system. That is the meaning of convolution. That's what we have studied so far, and we have seen certain examples based on that. Secondly, coming to correlation, what is the meaning of correlation? What is the meaning of correlation? Sir, correlation का मतलब क्या होता है? If you try to understand the dictionary meaning of correlation, correlate, I have to relate something, obviously, exactly. तो कोरिलेशन यहाँ पे मैं कुछ रिलेट करने वाला हूँ. कोरिलेशन का डिक्शनरी मीनिंग बोलता है कि भाई आपको कुछ रिलेट करना है, आपको कुछ यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी फाइंड करना है, आपको कुछ रिलेट करना है, कुछ सिमिलर फाइंड करना है. दिस आर द वर्ड्स व्हिच यू विल फाइंड इफ यू ट्राई टू लुक विद द ऑक्सफोर्ड और द डिक्शनरी मीनिंग, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. Now, same thing. Why do I need to do this? Example, now it is 9:15 in the watch. And at this point, I say, hello. What did I utter in from my mouth? I uttered the word hello. Exactly at 9:20. Matlab, after a span of 5 minutes. After a span of 5 minutes, I utter the same word hello. So now, is this both signals same, sir? Can you tell me? Is both signals same? Because both signal are uttered by the same person, Najib sir. दोनों भी जो साउंड जो आपको आया है वो एक ही आदमी की तरह आपको आया है. ये मुझे पता है, ये आपको पता है, लेकिन क्या सिस्टम को पता है कि जिस हेलो सेकेंड टाइम हेलो जो आया है ये इसी ने आया है? हो सकता है किसी ने मिमिक्री किया होगा. जैसे एक वो मिमिक्री आर्टिस्ट है श्याम रंगीला जो मोदी का मिमिक्री करता है. So is it really Modi speaking or it is a Shyam Rangila speaking? How to identify this? In order to find this, we use a process, we use an algorithm of correlation. तो correlation क्या करेगा यहाँ पे? Correlation identify करेगा कि जो second sound जो आया है वो कितना similar है. How much similar it is. I want to find the similarity of this. Understood, sir? Yes. Now the question is, why do I need this? क्यों करने का? Reason number 1. First, but reason number 1 means I'm talking about applications. I'm talking about applications. How many of you seen CID? ACP Pradyuman Daya, Dr. Sadunke. Is there anyone? Yes, very many students are raising their hands. अब सुनो सर, मैं आपको एक छोटा सा एक क्रिमिनल एक आपको क्लिप दिखाता हूं मैं, नॉट क्लिप एक्चुअली, स्टोरी क्रिएट करने वाला हूं मैं. एक थ्रेट कॉल आया, ठीक है, कि whomsoever, हम उसको उड़ाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू किल दिस पर्टिकुलर पर्सन. अ थ्रेट कॉल हैज केम. वो थ्रेट कॉल आने पर आपका जो दया है उसने उसको रिकॉर्ड को टेप कर दिया. तब ये रिकॉर्डेड दैट पर्टिकुलर टेप. ठीक है भाई, ये टेप है, फाइन. क्या रिकॉर्ड किया उसने? अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. अ सिग्नल हैज बीन रिकॉर्डेड. हम ये तारीख के दिन इसको उड़ाने वाले हैं, फाइन. सेकेंड डे, टुडे इज मंडे, टुमारो इज ट्यूसडे. ट्यूसडे सेम थिंग हैपेंड, अगेन अ कॉल केम, सेम वर्डिंग्स. नाउ अभिजीत जो अपना जो डॉक्टर साडुंग के जो है, फाइन, फॉर द पर्सन हु इज इन द फॉरेंसिक, ही वांट टू चेक whether both the voice notes are of similar person or not, same person or not. So what he will do, he will use the method of correlation. He will use the method of correlation to check whether the things are coming properly or not. Fine.
सेकंड एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं, मतलब ये आप फॉरेंसिक्स में जनरली यूज होता है टू चेक. सेकंड एग्जांपल, आप, not up actually, it is like the faculties who come to the college. Whenever they come to the college, they, you might have noticed the faculty first have to place their finger on the fingerprint module. Why do they do this? They do for as a biometric attendance. Some of the students has taken that as a mini project, right? Okay, I want to go with biometric attendance. So वहाँ पे क्या होगा? The fingerprint of Najib sir is already recorded when he joined SPIT 1st July 2016. उनका फिंगरप्रिंट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है. अभी आज क्या तारीख है? आज 21st Feb 2022. When this person comes once again and when he plays the fingerprint, he will correlate. He will check the similarity, whether it is matching or not. If it is matching, yes, 100% match, then he will say, yes, thank you, your attendance has been recorded successfully. Second application. Application number 3. Application number 3. बच्चे कितने शार्प होते हैं ना. क्या बोला मालूम बच्चों ने? आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. Computer students and IT students, the students to whom I am teaching foundation of signal processing. बोले Najib sir, we came to know that your wife is a doctor. मैं बोला yes, my wife is a doctor. So what does your wife do? बोला my wife takes the ECG of a patient. Do you know what is ECG? Electrocardiogram. My wife takes the ECG, electrocardiogram, and then looking at the ECG of a person, he say whether his heart is functioning properly or not, whether the valves, the ventricles, the aortas, the RTM, are they work, the chamber of the heart, are they working functionally properly, optimistically or not? बोले ओके. बोले सर हम जो है आपके वाइफ के पेट पे पाव लाने वाले हैं. बोले मतलब हम क्या करने वाले हैं? सुनिए स्टोरी ध्यान से. बोले सर व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर, वी हैव समथिंग इन आवर आइडिया, इन आवर माइंड. Sir, this is the ECG. This is the ECG signal of patient. Electrocardiogram, which looks something of this kind. बोला हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ होता है, मैंने भी देखा. ऐसे कुछ पिंक कलर का पेपर होता है और पिंक कलर के पेपर के ऊपर ऐसे ऐसा डायग्राम से ऐसा कुछ बना हुआ होता है. एंड देन शी टेक्स्ट के हाँ आपका देखो ये इशू ये इशू ये इशू. बोला सर हम भी ये लेने वाले हैं जो कि एक्चुअल फंक्शनल वर्किंग हार्ट का रहने वाला है. मतलब ठीक है, और ये हम एक सिस्टम में देंगे. सेकेंड टाइम whenever a patient, वर्डिंग सुनिए इंजीनियर क्या बोल रहे हैं. whenever a patient comes to us, we will record the ECG of that person. Fine. After taking the ECG of that person, we will correlate. वर्डिंग सुनिए सर. we will correlate whether it is matching with the actual functioning of the heart, the original this thing. And if it is matching, we will say तेरा हार्ट मस्त काम करता है, कोई केमिकल लोचा नहीं है. और अगर वो काम नहीं करता है तो we will say there is some issue, there is some problem, you need to go and have a word with Najib sir's wife. तो आपका बोले काम थोड़ा इजी हो जाएगा. Do you agree to this, sir? What I'm trying to say? Yes, sir. So again, this is like a biomedical application. I call this as a biomed application. Some of the students might have taken this particular topic, like ECG signal लेके हम उसको compare करेंगे, then we'll say whether your heart is functioning properly or not. And if it's possible, we may even tell the disease as well. कोई लोग तो इतने बुशार्प थे, बोले सर हम तो बोल भी देंगे कि भाई देख तेरा जो है वो पीवे बराबर काम नहीं कर रहा है, तेरा वेंट्रिकल में कुछ तो प्रॉब्लम है. मतलब ठीक है, मतलब अरे यार मतलब वही कहा उसको, घर में चूल्हा जलता है यार, ऐसा मत कर, मर जाऊंगा भूख से मैं. ठीक है, whatever. So I hope you have understood what I am talking about correlation. Just मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था कि correlation जो है वो फिजिकली क्या होता है, उसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या है. I hope you got it. Now let's come to the numericals. Before we come to the numericals, I want you to show a very simple, interesting thing. The correlation are basically of two types. Correlation are of two types. The first type and the second type. Type number 1,
and type number 2. Type number stands for auto and type number 2 stands for cross. What is the meaning of auto? Auto matlab, like example you can see here, case number 1, okay, whatever you take. In case of auto correlation, I am comparing one signal with the same signal itself. एग्जाम्पल देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया सेम सिग्नल है यहाँ पर मैं चेक करो सेम सिग्नल बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस द वेरी थर्ड केस में डू यू थिंक द बोथ द सिग्नल्स आर गोइंग टू बी सेम आर बोथ द सिग्नल्स सेम सर No, sir. No. Why? Because over here, if you try to scrutinize the wordings, if you try to scrutinize the wordings of those engineers, what they were saying कि सर पहला जो सिग्नल रहेगा वो एक्चुअल फंक्शनल वर्किंग हार्ट का रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक हार्ट का, एंड सेकंड जो सिग्नल जो रहेगा वो पेशेंट का रहेगा. फिर हम चेक करेंगे भाई कितना सिमिलरिटी वहां पर आ रहा है. तो यू कैन से कि these are the two different signals are there. These are two different signals. That's the meaning of cross. In case of auto, same signal. In case of cross, different signal. Understood, sir? Okay. तो इससे मतलब मुझे ये हिंट लग जाता है कि जो एग्जामिनर है वो जब आपको ऑटो कोरिलेशन का जब बात करेगा वो टाइम पे आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सिग्नल देगा एक्स ऑफ टी करके. यस और नो? यस. लेकिन जब वो क्रॉस कोरिलेशन की बात करेगा तो वो टाइम पे आपको दो सिग्नल देने वाला है x1 of t और x2 of t बोल के, because he is going to speak me with cross correlation. Is it clear to you, sir? What's the meaning of auto and cross? Auto Yes. मतलब आपको सिर्फ एक ही सिग्नल दिया जाएगा because same सिग्नल का वो कोरिलेशन परफॉर्म करना है, और क्रॉस के अंदर it is like x1 of t and x2 of t. Now how this has to be done? What is the idea and how to perform autocorrelation and cross correlation? That is the question which we have right now in front of our mind. How to do this? So in order to perform the correlation, कैसे करोगे सर? Correlation is same as convolution. Number 1. इस फर्क ये सर सवाल ये उठता है कि अगर सेम है तो फिर अलग अलग क्यों बोला, फर्क पड़ता है सर. सुनिए ध्यान से. Convolution, you know very well how to do now. Is there anyone who is still facing problem with convolution के सर नहीं समझा कैसे करना है? एक छोटा सा डाउट था बच्चों का कि भाई कैसे करें सर, वो भी आज क्लियर हो गया कि हाँ ओके फाइन, दिस इज हाउ द लिमिट्स आर टू बी एडजस्टेड. हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ कोरिलेशन. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कोरिलेशन. सी कन्वोल्यूशन में एक चीज क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आपको दो सिग्नल का रिक्वायरमेंट है. यू रिक्वायर टू सिग्नल. आई कॉल इट एज x of tau and I call it as h of tau. Fine. To be more precise, I'll call it as x of t and h of t, because अपने को यूजर जो है वो तो ये देने वाला है ना, वो आप उसको रिप्लेस करते बोलते x of tau, h of tau, h of t minus, that is your problem. बट आपको यूजर तो x of t, h of t बोल कर देता है. तो यूजर आपको जब ये देता है और ये लेने का फिर आप उसको x of tau, h of t minus में कन्वर्ट करते हो, इंटीग्रेशन लगाते हो, लिमिट के साथ में खेलते हो, उसको आगे पीछे करते हो, एंड देन you know the procedure. Now I don't want to discuss with that. How this has to be done and expanded for in case of correlation. How can I extend my knowledge of convolution to solve a problem of correlation? In order to solve a problem of correlation, you know very well that first of all I require two signals. Sir, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिया है. Mama, only one signal. Okay, बेटा, don't worry. क्या करिए? You take two signals. Two signal कुछ भी मम्मा कैसी बात? अरे रुको बेटा, listen. Two signal. You call this as x of t. हाँ ये वाला कॉपी मारने का, हाँ कॉपी मारने का. और ये जो सिग्नल जो आया है ना, इसको भी अब x of t बोल. मम्मा कुछ भी. अरे दो चाहिए ना तुमको, बट इसके अंदर छोटी सी उंगली करने का, माइनस टी बोल के. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? Time reversal. एग्जैक्टली, फैंटास्टिक सर. सर यहाँ पर भी यस, यहाँ पर भी वही करने का, x1 of t लेने का और इसको लेने का x2 of minus t.
सर उंगली ऊपर किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू उंगली हियर, नो प्रॉब्लम, इट इज विद नो इश्यूज एज सच। इज इट क्लियर टू यू सर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? Yes, sir. ओके, चलो अभी सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा चीजें और क्लियरिफिकेशन में हो जाएगा आपके लिए। यह हमको एक ही दिया है, बोला है कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन। सर हाउ कैन यू फाइंड कोरिलेशन? Which correlation supposed to find? Cross or auto? Cross or auto? Yes. What kind of problem this is? Cross correlation or auto correlation? Only one signal is given to us. Auto. Auto. It is auto. Why auto? Because we have understood in case of auto you'll be given only one question, that is x of t. Okay. See, x of t dot h of t minus tau. ये क्वेश्चन हमारे सामने है. This question is basically a rectangular pulse. This question is basically a rectangular pulse ranging from -1 to +1, and the height is plus a. Height is a of that pulse, and the width is of 2 units, ranging from -1 to +1. Now you have to perform autocorrelation. X of t dot x of t minus tau. Fine. Minus infinitive to -1. See, minus infinitive to -1, there will be no overlapping. You all agree to this? -1 to t tau plus 1. Fine, tau plus 1. You need to put the limits, like t replaced by t minus tau, like the way we have done in the previous case today itself. You just have to put, instead of t as tau, as t minus tau, so tau plus 1, x of t dot h of t minus tau. There will be an overlapping in this case. And again, if I go from 1 to plus infinitive, again there will be no overlapping in that case. Fine. Now how to solve the problem? You have value as a for the first case. Second case में भी value आपका plus a रहेगा, करेक्ट ना? जब ओवरलैपिंग जब होगा तो यहाँ पर भी a है, वहां पर भी a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर. फाइन. Then tau plus 1 minus of -1, substitution of the upper limit and lower limit, and you get answer as a square tau plus 2. Fine, agreed? See, same thing, no overlapping. Once you start coming over here, will be overlapping will be happening. Then again no overlapping if it goes out of the +1 wala window. You have here as a square tau plus 2. सेकेंड केस में उसने नेगेटिव पोर्शन को लेने वाला है वो. फाइन. लाइक इफ यू कंसीडर इट इज अ नेगेटिव वे, लाइक हम पहले उसने क्या किया, मूविंग टुवर्ड्स राइट, लाइक टाउ ग्रेटर देन 0. इफ टाउ इज लेस देन 0, देन इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. So you have this, and finally the graphical representation, and this is the point where you get the energy of the signal. This is the point where you get, because it is very large in number, it is the highest correlation. If correlation value is 1, if the correlation value is 1, that means exactly matched. If correlation value is 0, so this means it is not at all matched. You can see here, at this point and at this point, it is 0. It is no matching will happen. No matching will happen. And if I talk about at this point, highest matching is available, and we say the matching is at the top, 2a square. Have you understood, sir, what we are trying to do in this case? Yes. Yes. Fine. Okay. This was about continuous time. एक discrete का भी example हम लोग देख लेते हैं. Generally discrete is in semester 5, but still you should know this, like how discrete is to be done. But before we start with the discrete domain, like how discretized is done in this case, आपको पहले मैं आइडिया दिखा दे कोई डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल? इन द प्रीवियस केस आल्सो वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दैट. सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ये शायद मैंने प्रैक्टिकल के टाइम पे भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि यू माइट हैव हर्ड अ सॉन्ग. हर्ड अ सॉन्ग मींस यू हैव recorded a song in your computer, any favorite song of your choice, and you might have heard that song. So that song which you hear, is it a continuous or discrete or digital? What's the meaning of this? Is it a continuous signal, a discrete, or a digital? Can you help me out, sir, fast?
Discrete. Why it is discrete, sir? Why it is Sir, discrete? because it takes the data points at very large frequency at discrete time. See, यहाँ पे I went to this particular website pagalworld.com. I hope you might be aware of this. Fine. And here there are multiple songs are over here. And for example, चलो ये मेरा favorite song है. Fine. I'll just go over here and I will try to download this song. Fine. Any download option is available. For example, if I want to draw, चलो I'll download this. ये वाला चलो ट्राई करते हैं हम लोग. Fine. It is pagalnew.com. Okay. Song name Srivalli, 128 kbps, 20 kbps. Now I'll show you some magic. Okay. See, ये song को मैं डाउनलोड किया, ये song को मैंने डाउनलोड किया and see the progress. ये साइट्स पे जनरली वायरस होता ही है. ओके, वायरस मींस एडवेयर. अजय कावी सर यहाँ पे चेक करते हो, ये सॉन्ग अगर आप रीड करते हो यहाँ पे लिखा गया है 128 kbps और यहाँ पे लिखा गया है 320 kbps. Fine. Now what is the meaning of 128? What is the meaning of 320? That we'll understand later. But what is the size, sir? The size is 3.42 MB. If you talk about here, the size is, what is the size for this? The size is 8.48 MB. Have you noticed the change in the size? Is it? Have you noticed, sir? यहाँ पे size कितना है? Yes, sir. 3.42 है और यहाँ पे it is like almost double 8.48. Now why it is so? What is trying to show? What is the meaning of this? That we will try to understand this. कि भाई exactly यहाँ पे क्या होता है? Sir, understands in the scenario that, for example, the singer, whomsoever the singer is, Javed Ali is the singer of that song. बहुत अच्छा song sung किया उन्होंने. whomsoever, मे बी राहत फतेह अली खान है या फिर जेडबी है, हनी सिंह है, रानू मंडल है, whomsoever, हमीश रेशम है, जो भी सिंगर है आपको चॉइस का, वो सिंगर को मैंने स्टूडियो में लेकर आया और मैं उसको बोलता कि आई वांट यू टू सिंग अ सॉन्ग. दिस पर्सन विल सिंग अ सॉन्ग ऑब्वियसली इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज to 20 kilohertz. Why do I make this statement, sir? Because obviously audio frequency range in this particular value. And when this person sings that song in that range, it is a continuous time signal. Why it is known as continuous time signal? Because at every instant of time, I have one or the other value available. मतलब यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि what is the value, तो मुझे बोलेगा भाई कुछ तो वैल्यू यहाँ पर है, कुछ तो वैल्यू यहाँ पर है, कुछ तो वैल्यू यहाँ पर है. मतलब हर पॉइंट पर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिलना जरूरी है. Hence we call this as a continuous time signal. Continuous time signal का definition ही वही है. Continuous time signal is that signal where the value is available at any arbitrary instant of time. Is it clear to you, sir? Yes. So I have want to record this song. तो ये जो सिंगर है, इस सिंगर को मैंने कहा कि भाई आप गाना रिकॉर्ड करिए और ये गाना रिकॉर्ड करने के बाद में जब ये गाना रिकॉर्ड हो जाए, गाना जब ये बोलना शुरू करते हैं तो ही दिस पर्सन नाउ स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगर कौन है? सिंगर सर ये अपने जावेद भाई, जावेद अली. जावेद अली is going to sing this song. When this person starts singing a song, he will be generating a continuous time signal. Javed Ali is going to generate a continuous time signal. Now I want to record. What is ध्यान दीजिए sir. Now I want to record. What is the meaning of record? I want to store. Where I want to store? I can store either in CD. I can store either in DVD. Okay. I can store in pen drive. Okay. I may store in SSD. I may store in hard disk. Whatever. Multiple options are available in order to store that file. Okay. CD. What is the size of CD, sir? CD is for around 700 MB. DVD की बात करता तो होता है 4.7 GB. पेन ड्राइव सपोज मेरे पास में अगर है 4 GB का पेन ड्राइव मेरे पास में अगर है, SSD फॉर एग्जांपल इज 250 GB एंड हार्ड डिस्क मेरे पास में सपोज एग्जांपल है 1 हार्ड डिस्क 1 TB के हार्ड डिस्क है 1 TB. I hope you all are aware of these storage medias because it is we use generally day to day life. Fine. कोई है यहाँ पे जिसको नहीं पता है CD, DVD, पेन ड्राइव?
and I hope you are aware with the sizes as well. CD में you can store up to 700 MB, DVD में you can store up to 4.7 GB, पेन ड्राइव में can it is varying, like 2 GB का पेन ड्राइव आता है, 4 GB का, 8 GB का, depends. Like SSD maximum is a 512, 1 TB का भी आना शुरू हो गया है, हार्ड डिस्क 1 TB, 2 TB, 4 TB. ओके फाइन. नाउ ये गाना को अब मुझे यहाँ पे स्टोर करना है. सर हाउ टू स्टोर? स्टोर मतलब क्या करना पड़ेगा? स्टोर का मतलब ये है कि आई नीड टू स्टोर के एग्जाम्पल के एट 0 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द sound, I mean in terms of amplitude. Okay, what was the value of the sound at this instant? आपको दिखाई देता हो ना सर क्यों हम लोग चीजें इतना theoretical चीजें डिस्कस कर रहे हैं? I'll showcase it to you, sir. Just give me a moment. Yeah, okay, fine. I hope you have enjoyed the song. You have listened the song. Yes or no? Yes, sir. Okay, okay, fine. ठीक है. तो ये जो आपको I'll share the screen as well. Yeah, okay. So this is what the audio signal which is there in front of you. Okay. Okay. Now what I'm going to do this. What's the meaning of recording? रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं कहूंगा कि भाई 0 पे एग्जांपल इट इज 5 वोल्ट, 0.01 पे इट इज अराउंड 4 वोल्ट, 0.2 सेकंड्स पे इट इज अराउंड 3 वोल्ट, 0.4 seconds पे it is around this much. Means I need to record each and every instant. I hope you all agree to this. मतलब यहाँ पर मैं क्या करने वाला, I'm going to draw a table with time and value. मैं बोलूँगा देखिए at 0 it is 5 volt, at 0.1 time in seconds, time in seconds, 0.1 पे it is around 4 volt, 0.2 पे it is around 3 volt, 0.3 हो गया, 0.3 पे it is somewhere about 2 volt, then I say 0.4 पे it is somewhere around like 2.5 volt and so on. Means I need to record each and every point over there. Fine. Sir, I have a question. Sir, what is the value at 0.01? Oh, okay, sorry sir, I'll note over like 0.0 because continuous signal का मतलब ये होता है कि आपको हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना है कि even at 0.0000001. So now you tell me, sir, how many samples I'm supposed to take? How many samples I'm supposed to take in order so that this song gets stored in a very authentic, veracious, truthful manner? What can be done? How many samples I'm supposed to take?
almost infinitely large. फैंटास्टिक बेटा, फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की अगर मुझे पूरा इन्फिनिट सॉन्ग चाहिए सो दैट आई कैन हियर ईच एंड एवरी बिट, ईच एंड एवरी वोकल दैट पर्सन हैज सung इन द सॉन्ग, मुझे पूरा उसको सब कुछ मुझे स्टोर करना है, तो आई नीड टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल। भाई इनफाइनाइट सर, आपको छोटा सा मैं एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ तो इससे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगा, शायद हमने आपको पहले मैंने बताया होगा, आई डोंट नो, बट स्टिल नो वरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल शो यू दैट प्रेजेंटेशन। ये ओरिजिनल सिग्नल है, डोंट गो विद द नेम सर, ट्रू ईईजी सिग्नल, ईईजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राफ सिग्नल। तो मेरे लिए फिलहाल अभी काम का ये मेरे पास एक सिग्नल है और इस सिग्नल को मुझे स्टोर करना है मेरे कंप्यूटर में। हाउ कैन आई स्टोर? तो आपने कहा भाई इनफाइनाइट सैंपल, बट सर टेल मी इफ आई रिकॉर्ड, मतलब इफ आई स्टोर इनफाइनाइट सैंपल, लाइक एग्जांपल इफ आई स्टोर लाइक दिस, सपोज उसमें आपने मुझे कहा कि सर इनफाइनाइट सैंपल आपको लेना पड़ेगा। So in order to store infinite sample, what should be the size of my storage media? Yes, can you answer this question, sir? Very large. Very large, मतलब 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, 4 TB हार्ड डिस्क भी मुझे सफाइस नहीं करेगा। Do you agree to this? Yes, sir. मतलब 4 TB का हार्ड डिस्क, what is the meaning of 4 TB? 4096 GB। 4 TB का मतलब होता है 4096 GB, मतलब 4000 GB का भी अगर मैं हार्ड डिस्क लेकर आता हूँ, ओके, एंड 4000 अगर 4 TB का हार्ड डिस्क आप खरीदने जाते हो मार्केट में, आपको 10,000 की रेंज में मिलेगा आपको। यस, आई होप यू आर अग्री टू दिस, 10 से 12,000 की रेंज में है। इफ यू Yes. वांट यू कैन चेक इट आउट। तो 10-12 हजार रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर मैं वो लेकर आता हूँ, कंप्यूटर में लगाता हूँ, और अगर मैं ये जावेद अली का गाया हुआ इतना प्यारा गाना अगर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो वहां पे मुझे वो एरर देगा, इनसफिशिएंट स्टोरेज, काइंडली अटैच वन मोर हार्ड डिस्क। क्या करना पड़ेगा फिर? और एक हार्ड डिस्क लेकर आने का और 12,000 रुपये डालने का, 8 TB हो गया अभी। एक 5 मिनट के बाद ही फिर से एरर आएगा, नॉट 5 मिनट सर, बिकॉज सॉन्ग तो 3 मिनट का ही है। एक एक 3-4 सेकंड के बाद में फिर से आपको एरर आएगा, इनसफिशिएंट स्टोरेज। मतलब आफ्टर 3-4 सेकंड्स यू विल गेट एन एरर, इनसफिशिएंट स्टोरेज, इनसफिशिएंट स्टोरेज। मैं क्यों बोलता हूँ सर ऐसा? इसका रीजन है सर, सुनिए ध्यान से, क्योंकि हम जब 9th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे, 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के अंदर जो मॉड्यूल 1 था, चैप्टर नंबर 1, वहां पे आपको कहा गया था एक्सियम, बिटवीन 2 पॉइंट्स there exist infinite number of points। क्या बोलता था हम लोग को ज्योमेट्री के एक्सियम के अंदर कि 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि 0.0 एंड 0.1, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और हर पॉइंट पे वैल्यू होगा, हर पॉइंट पे वैल्यू, बिकॉज़ ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। सर इतना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मे बी बिकॉज़ आई डोंट हैव दिस थिंग, सो व्हाट कैन आई डू सर? What can I do? Give me the answer, sir. What can I सर do? रीडिंग लेने की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। Yes. What about other student? What about other students, sir? मैंने जानबूझ के प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है और ट्रेंडिंग सॉन्ग लिया है, because everyone might have listened to this and everyone is now very very good fan of movie Pushpa. Hence I thought of going with this. और वो श्रीवल्ली का typical step है. Even I have tried that thing. You might have checked it on my WhatsApp status. I don't know. Yes, 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 sir. What can be done? How to solve this problem? मतलब मुकेश अंबानी को लाना पड़ेगा अभी तो फिर, कि भाई वो पैसा फेंकता रहेगा और हम हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क खरीदते रहेंगे। क्या करोगे सर? As an engineer, the problem statement is clear in front of you. What would be the solution to solve this problem? मैं जानबूझ के सर आपसे मैं टेक्निकली एप्लीकेशन वाइज बात करता हूँ, so that while making your projects, the things becomes more simpler and that vision is clear and open in front of you. Obviously, I need to go with sampling in such a way so that, वो कहावत है ना कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे कुछ मुझे सैम्पलिंग करना पड़ेगा ताकि मेरा पर्पस भी सर्व हो जाए गाना सुनने का, और मुझे क्वालिटी जो हम कहते हैं, जो मेरा जो जो इफेक्ट जो मुझे मिलने वाला है वो भी हैम्पर ना हो। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? सुनिए सर यहाँ पे क्या होने वाला है। आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। आई हैव टेकन पर्पसली द current the
recent example. So this is the signal available in front of me. Now how to take the sample? तो मुझे एक जन ने बोला सर एक काम करते हैं, देखिए सर आपके पास में CD है 700 MB वाला, you take less number of sample. I hope you all agree to this. If I want to store the data with a very minimum space, I need to take very less sample. तो उसने मुझे सैंपल जो उसने लिया है, सैंपल उसने ऐसा लिया है, क्या लिया उसने सैंपल में? तो उसने बोला देखो सर एक सैंपल आप यहाँ ले लीजिएगा, ओके, एक सैंपल आप यहाँ लीजिएगा, एक सैंपल यहाँ लीजिएगा, एक सैंपल यहाँ लीजिए, एक सैंपल यहाँ लीजिए, and now it started recording the value of the sample. At this the value is this much, at this the value is this much, at this point the value is this much. So I have taken samples like this, and after taking the samples I have joined those lines. How did I join those lines? The way I used to do when you were in nursery. नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो हम लोग डॉट्स को ज्वाइन करके हम लोग डोरेमोन, डोरा, हम लोग ऐसे चिंपैंजी, हम लोग ऐसे इमेजेस ड्रॉ करते थे हम लोग. Have anyone tried this in their nursery or first or second standard? Yes, sir. Joining the dots. You used to join the dots and then you used to draw some painting. फिर बोलते हमको टीचर बोली कि now you color it, the what you have drawn over there. Okay. तो आपने इसको join किया. Now sir you tell me, is the red colored constructed signal, is the red colored reconstructed signal same as original signal? Is it same? No, sir. Exactly no, obviously no. Why? Because sir the red color signal में अगर आप देखते हो तो ये शुरू यहाँ पर हुआ है, ये शुरू यहाँ पर हुआ है और खत्म इधर हो रहा है. अगर मैं पॉजिटिव पीक की बात करूँ तो ये देखो पॉजिटिव पीक कब, I can say it is only having one cycle. But if I talk about black color, वो यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया. It is repetitive in nature and this is the one cycle. मतलब इसका अगर आप साइकिल की भाषा में अगर बात करते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इसका साइकिल जो है वो सिर्फ इतना है ओरिजिनल वाले का, और जो नया वाला जो सिग्नल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल? साइकिल का मतलब ये होता है कि जहां से शुरू वहां पे खत्म. तो ये जो सिग्नल देखते हो ये वाला यहाँ पे शुरू हो गया और ये इधर कहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद में फिर वापस चालू होगा रिपीटेशन. So can I say the reconstructed signal is of very very low frequency, very low frequency compared to original? Yes, sir. Yes. So this problem occurred why? Because you have taken very low sampling rate, is known as aliasing effect. I call this as aliasing effect. Viva question. What is aliasing effect? Aliasing effect is that when you take very low sampling frequency, at very much less than twice of the original sampling frequency. What is the meaning of fs? Fs is the frequency of this black colored. Fs is the frequency of this black color. So I have taken frequency even less than twice of fs. If I go with this sampling frequency very much less than twice the frequency of the message original signal, then I get a new signal which is a very low frequency, and that phenomenon is known as aliasing effect. Understood? What is the solution, sir? The solution is you need to increase the sampling frequency. Initially it was very very less, now I need to increase. So I am taking sampling frequency equal to twice of fs. I have taken sampling frequency equal to twice of fs. Now what will happen, sir? Now in this case if you try to check out कि नाउ ओरिजिनल सिग्नल का साइकिल भी उतना ही है और जो आपका नया सिग्नल है उसका साइकिल भी उतना आया है. सो आई कैन से नाउ इट इज अ वेरी मच क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रियल टाइम सिग्नल. बट दिस सिग्नल लुक्स लाइक सेम. इज इट द सेम सिग्नल? No, sir. No. Why, sir? Because the original signal, if you try to look over there, it is sinusoidal in nature. It is a following of sine. It is a function of sine. But if you talk about the orange color signal, the reconstructed signal looks somewhat triangular in nature. It's a triangular signal. But what is the benefit I'm getting? Same frequency, same time period, same cycle. That is matching, no doubt about it. कब होता है जब आप FO कितना रखते हो? Twice of fs, equal to twice of fs. Again, what is the solution, sir? क्या करने का फिर? Increase. बोलिए सर. Increase the sampling rate. Exactly. See now how much sampling I have taken, sir. How many samples are taken? Very very much more than twice of fs. Fine. Now do you think it is matching with the black color?
ऑलमोस्ट मतलब मच बेटर देन ऑरेंज कलर्ड वेवफॉर्म. जब अपने ऑरेंज कलर जो वेवफॉर्म जो देखा था वो ट्रायंगुलर था, और ये जो वो एग्जैक्टली इसको मैच करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है. अगर उसको एग्जैक्टली अगर मैच करना है तो ब्लैक के साथ में क्या करना पड़ेगा फिर? हाउ मेनी सैंपल्स आई एम सपोज्ड टू टेक? Exactly infinite. एग्जैक्टली सर, फैंटास्टिक. सर अभी मुझे एक चीज बताइए, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द सिग्नल? इसका साइज कितना रहेगा? कम रहेगा. क्यों कम? क्योंकि सैंपल बहुत कम लिया आपने. यू हैव टेकन हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 सैंपल्स यू हैव टेकन. अगर मैं एक सैंपल को एक बाइट पकड़ता हूं तो 8 बाइट का मेरा गाना रहने वाला है. दिस सॉन्ग विल बी ओनली 8 बाइट्स. And when I try to play this song on my speaker, on my home theater, on my console, I won't able to get that feel of that song. What about this? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, almost 13 bytes. Size of the song has the file size has increased, but if I try to play this, I will get a good way to listen the songs. थोड़ा distortion होगा because यहाँ पे triangular nature है, but okay, manageable. Like, what about this? What will be the size of the file? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 9 9 6 are almost 9 around 50 to 60 or 70 are around approx. These many, so what will the size of the byte be the same? And if I try to listen this, I'll get better resolution and you will enjoy the sound in more better way. Understood sir what I'm trying to say? अभी काम करने का आपको ये अगर आपको देखना है, मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज गूगल मीट इतना प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा चीजों को. आप काम करिए at your system, at your home. If you have a very good speakers मतलब I recommend you 2.1 or maybe 5.1 or maybe 7.1. 2 speakers अगर है, 2.0 system अगर है, so that won't help you to understand more better way. I'm talking about speakers 2.1 or 5. Nothing about this. 2.1 speakers आपके पास में है. एक 2.1 speakers होता है जहाँ पे आपको दो सब वूफर विथ वूफर आपको मिलता है, या फिर you can go with 5.1 or 7.1 or the car speakers if you provided car speakers are of good company, JBL या Sony या Pioneer का अगर होगा तो और भी अच्छा है. Okay, and then you listen. What? You listen both the songs, this as well as this. One song is of 128 kb per second and another song is of 320 kilobit per second. What's the meaning of this? In case of this first song, I have taken 128,000 bits as a sampling rate per second. And if I talk about this, it is around 320 kilobit per second. And obviously, if the bit rate increases, obviously the size has to be more, 8.48 compared to 3.42. But see and feel the difference. Have any one of you tried in the earlier these two cases? Have you listened these songs at 128 and 320 kbps bitrate? If yes, then can you share the experience? It could be any other song, not Srivalli, it could be any other song. But have you feel the difference between these two songs played at 128 and 320 kbps at your console? Come on, can you raise your hands? Sir, haven't tried. Okay, that is the case for Shrutiman, but I can see around 50 students are there. 50 में से किसी ने try नहीं किया? Okay, no worries, sir. If you have not tried, kindly do the experiment at your home, because until unless you don't do this real-time experiments, things won't be clear for you. Okay. So this is what I want to discuss with you. Now I hope you have understood what is the meaning of continuous time signal and a discrete time signal. तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो होता है जिसको हम सैम्पलिंग करके तोड़कर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. एंड व्हेन यू हियर दैट सॉन्ग generated via the speaker of your computer, and when you, or for example if you watch a video and when you watch that video on the YouTube, fine, I'll give one more example to you, like 8K video YouTube example. Generally agar if you go to mall or somewhere, like you might have noticed this, they keep TVs on display
and you check over there the quality of the TV. Fine. Just have a look over here, sir. Eight HDR, 8 HDR TV, 120 FPS. Okay, what's the meaning of 120 FPS, sir? What's the meaning of 120 FPS? 120 frames per second. Exactly, 120 frames per second. So that gives you intuition. It is obviously, no doubt, a continuous time signal. When the actually this bear is walking, when the bear was roaming around, it is a continuous time signal. But during at the time of recording, in order to store that video, he has taken 120 frame per second. So this video which I'm watching right now is a discrete signal, but since the samples are so close, are so near to each other, that I get an illusion it is a continuous time signal. Have you agreed with what I'm trying to say, sir? Have you understood? It is a discrete time signal. It is a discrete time signal. Whatever songs I'm hearing via a speaker or a video which I'm watching on the screen is basically a discrete time signal. Why? Why it is discrete time signal? Because computer can't store infinite sample. I require a more amount of storage. But why do I get that illusion? Because the frames are so nearly spaced. The audio samples are so nearly spaced that gives me an illusion that it is a continuous time signal. Fine. Why do I get illusion? Only because of persistence of vision and persistence of hearing. क्या बोलता है persistence of vision, persistence of hearing? वो ये बोलता है कि कोई भी फ्रेम या कोई भी ऑडियो अगर 1/10 of a second के दरमियान में अगर सुनते हो, you will feel that song or that frame is of same kind. Example is a parrot in the cage. You take a postcard. On the postcard, you draw a parrot. You draw a cage over here and make that postcard to rotate. Once you start rotating, the entire string will get a twist, and then you release it. And when you release and when you start unwinding, you will feel as if the parrot that you have drawn is in the cage. But is it that the case? No, the parrot is on the first half and the cage is on the back side. Fine. Fine. Understood, sir, what I'm trying to Yes, say? sir. Okay, so this is from my side. That is about the discrete. Tomorrow we're going to start with the discrete time signal understanding and a small change. Tomorrow the lecture of 10 to 11 will be taken by Kasambe sir, and I'll be taking on Wednesday and Friday 9 to 11. Fine. I hope the things are clear to you. Yes, sir.